So, good afternoon, class 4th. In today's class, we will study about our natural resources. So, class, in this chapter, we have to learn what are natural resources, why they are so important for us, and how these resources can be used by us in a proper and a convenient manner. So, let's begin the chapter. First of all, nature has given to us so many things like water, air, soil, minerals, plants, so on. So, all the things which are given by nature are basically referred to as gifts of nature. Early human beings or earlier times, we as human beings, we did not know how can we use this gift of nature. So, what we did with the passage of time, human beings learned to how can these resources can be converted into useful things to satisfy our needs. So class, here I have written with pencil, it is a little light. So when the gifts of nature, for example sunlight, is converted to a useful thing like electricity, solar electricity, it become a valuable resource. So when the gifts of nature are converted to any useful thing, they become a valuable resource. So natural resource and valuable resource, I hope you have got the difference between the two. Now class, let's study types of resources. Now all materials available in our environment which satisfy our needs is called a resource. Now they are of two types. All natural things such as land, air, water, soil, etc. These all are natural resources. So class basically is all the resources which a human being cannot produce anyhow. Can you imagine class making a sun by yourself? Or class, can you make water by yourself anyhow? I don't think so. So all those resources which are only and only provided by nature are natural resource, and things which are made by human beings using a natural resource are called human made resources. So those resources which are made by us as a human being like roads, buildings, electricity, machines, and there are many more examples. Can you recall any example? Like a notebook is also made by a human being. But class, tell me, can I count trees or plants as a human made resource? No, because trees and plants are gifts of nature. But if I say notebook is a human made resource, then yes, this is true. Why? Because humans have converted the gift of nature, that is the bark or the wood of a plant, into paper. जब bark की wood को convert कर देते हैं पेपर में, कन्वर्जन से हमारे पास क्या आ जाता है? वैल्यूएबल रिसोर्स. सो हमने पहले ही करा था कि कोई भी रिसोर्स अगर कन्वर्ट हो जाता है टू अ यूज़फुल थिंग, वो बन जाता है वैल्यूएबल रिसोर्स. सो क्लास याद रखना वैल्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग एंड अपना नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग. नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो क्लास देयर आर बेसिक two types of natural resources. Now class, the word is little difficult and I have seen most of you are pronouncing it wrong. So how will you speak this word correctly? You will break it into two three parts as you please. I say it like eggs, horse, dibble. Eggs, horse, dibble resources. So together it become exhaustible resource. Second is inexhaustible resource. Inexhaustible resource. Now class,
exhaustible resource are basically, what is the meaning of exhaustible? Exhaust होना is something which is getting empty, जो पूरी तरह से खाली हो रहा है, जो पूरी तरह से empty हो जाए. So I have written here to use something completely. किसी चीज़ को आपने पूरा यूज़ कर लिया. आप ग्लास पी रहे हो मिल्क का और आपने उसको पूरा फिनिश कर लिया, तो आपने कंप्लीटली पूरा बॉटम तक फिनिश कर लिया, ठीक है, तो आपका मिल्क एग्जॉस्ट हो गया. नाउ सेकेंड इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स. नाउ जो आप विच विल नेवर फिनिश, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर बेसिकली क्लास दोज रिसोर्सेज जो कभी फिनिश नहीं होते, आप कितना मर्जी यूज़ कर लो, बट एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो होते हैं वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सकते हैं. नाउ सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वी हैव आर मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एलुमिनियम. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ पेट्रोलियम. सो पेट्रोल इज़ ऑल्सो अ वेरी important exhaustible resource. Now natural gas is another example. Very important to note class, exhaustible resources are also known as a non-renewable resource. Why so? Because exhaust होने के बाद ये resource अगेन रीन्यू मतलब फिर से नया नहीं बनता, री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया. सो ये वाले रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म हो सकते हैं, अगर ख़त्म हो गए तो हमें नहीं मिलेंगे, ये फिर से रिन्यू नहीं हो सकते. नाउ सेम इज़ विद not same, opposite is with your inexhaustible resources. inexhaustible resource में इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स में हमें क्या मिलता है? इनएग्जॉस्टेबल जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, जो एग्जॉस्ट ही नहीं हो सकता, जो फिनिश नहीं हो सकता, वो क्या रिन्यू हो सकता है? यस. सो देयरफॉर वी कॉल देम एज renewable resources. Now can you tell me any example? The best is solar energy, water, air, animals, all these are inexhaustible. But class, here is written animals. Can you imagine if animals, any of the species of animal get extinct, it is also difficult to reproduce. Like the pigeon dodo, it was it is an inexhaustible resource, but if they are hunted, if animals are hunted in large quantity, their natural homes will be destroyed. They will become extinct. Extinct का मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, कोई भी स्पीशी ना मिलना आपको उस एनिमल की. सो अगर हमने एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करा तो वो भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बन जाएंगे. सो इजी. Now class, they have given in the book different types of resources which are inexhaustible. Now water से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. एयर अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उससे हम ब्रीथ करते हैं. सोलर एनर्जी प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है, हमको एज अ ह्यूमन बींग्स अनलिमिटेड थिंग्स में हेल्प करता है, हमें लाइट मिलती है. वी कैन ऑल्सो कुक फूड इन अ सोलर हीटर. वी कैन ऑल्सो हीट वाटर with the help of sun. The best part, we can generate electricity. So class, there are huge solar panels जो कि इंस्टॉल करे जाते हैं. दे लुक लाइक दिस. इस तरह से सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे जाते हैं और उनकी एनर्जी को हम एक जनरेटर में सेव करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट. सो इट इज़ अ गुड मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. कम टू soil is also needed to grow plants. Why? Fertile soil is good for crops. Now come to class conservation. class conservation का मतलब होता है किसी चीज़ को कंजर्व करना. जब हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, हम ये बोलते हैं that we are also conserving, we are protecting something. So conservation, we must use natural resources very carefully. Why? हमें क्यों यूज़ करने चाहिए सारे नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली? मुझे तो नहीं पता. बिकॉज सो दैट दे लास्ट लॉन्ग, ताकि वो
बहुत टाइम तक हमारे पास रह सके। अगर वो फिनिश हो जाएंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे क्लास? वी विल गेट नथिंग, राइट? अगर आप इमेजिन करो, अगर पेट्रोलियम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया तो क्या हम कार में घूम पाएंगे? नो। अगर कोल एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या स्टीम इंजन या फिर हम कोल फॉर बर्निंग किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर पाएंगे? नो। सो इसीलिए हमें अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नाउ यहाँ पे कुछ मीन्स दे रखे हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा हाउ कैन वी कंजर्व देम, एंड दे आर वेरी इजी। सबसे पहले क्लास, पोल्यूशन। हमें वी शुड नेवर पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। एंड सॉइल क्लास, दिस इज मेनली आई एम टेलिंग यू, सॉइल कैसे पोल्यूट होती है? तो मिट्टी है, मिट्टी तो आप बोलोगे वो तो ऑलरेडी डर्ट है मैम, डर्ट है तो वो गंदी कैसे हो सकती है? जब क्लास हम सॉइल में, गार्डन्स में, पार्क्स में हम उसके अंदर प्लास्टिक छोड़ देते हैं या कोई भी ऐसा पेपर या कुछ भी ऐसा मटेरियल छोड़ देते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर द सॉइल, या फिर जो कि डिकम्पोज नहीं होता सॉइल में, वो सॉइल को पोल्यूट करता है। सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी प्लेग्राउंड में जाएंगे, हम अपने रैपर्स हमेशा डस्टबिन में थ्रो करेंगे, ना कि सॉइल में। सेकेंड इज क्लास, we must plant more trees. So we should always plant more and more trees. We must not hunt wild animals. Very important class. Animals को हमें hunt नहीं करना चाहिए. They should be protected. We must save electricity. क्लास, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए। We must develop other sources of energy. अब इन जो सोर्सेज आज के टाइम में हमारे पास हैं, उनके अलावा अदर सोर्सेज भी हमें ढूंढने चाहिए फॉर एनर्जी। सो क्लास, विद दिस आई एंड अप दिस चैप्टर. आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल. If you have got any doubts, you can always message me.